हेलो निधि, कैसी हो? हेलो। बहुत सही। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कैसे चल रहा है दिवाली? ऑल दिवाली। अभी तो काम ही इतना है ऑफिस में कि दिवाली दिवाली जैसी लग नहीं रही है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? तुमने शॉपिंग वॉपिंग की? या बहुत सारा। मतलब साफ सफाई इज राइट ऑन द टॉप। बट बिफोर यू रश टू डू एनी दिवाली शॉपिंग, प्लीज रिमेम्बर few things. And this is for everyone, seriously. Like, which is investment scams, financial fraud, most importantly, cybercrime जो हो रहा है. And Ruturaj, हम्म। you will be amazed to hear the many thousands of crores जो धुल चुका है मार्केट से लोगों के, because of हम्म। financial fraud happening all over the internet and through your phones. So yeah, be careful. And please try and share as many people as you can, because today is actually in public interest which we are doing this. Because हम्म। remember, आपका और मेरा hard earned money is really really difficult to make. And scammers लोग बैठ के within seconds, within minutes, पूरी जमा पूंजी खत्म कर देंगे. तो please share with as many people as you can. Let's just do it today. Okay. या इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दिस अप। अभी तो आजकल सॉरी, अभी तो आजकल काफी सारी चीजें सुनने में आ रही है, लाइक एंड टारगेट्स आर नॉट कन्फाइंड टू एनी डेमोग्राफिक, जिसमें ऐसे बोल नहीं No. सकते कि सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ हो रहा है या फिर सिर्फ No. यंग लोगों के साथ हो रहा है। किसी के No. साथ भी हो रहा है, दे जस्ट टारगेटिंग एवरीबॉडी अंडर द सन, जो मिल जाए उसको लूट लिया। No. और इतने सारे क्रिएटिव तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। मैंने तो अभी ये भी देखा कि व्हाट्सएप पे इमेजेस फॉरवर्ड होती है जिसमें अपेरेंटली इफ यू डाउनलोड इट, they just insert malware into your phone and they're able to get all the details, extract money No. from your device. I don't know कितना सच है इसमें। बट इसके अलावा भी सब डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात कर ही रहे हैं। No. और इट्स वेरी इजी टू से कि लोग करते हैं तो ऐसे फंस कैसे जाते हैं इन स्कैम्स में। बट आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल स्टोरी अभी, दैट नाउ दैट वी आर टॉकिंग। No. I was recently, I had moved to Hyderabad. This was back in 2015। और No. मैंने तब एक टिकोना इंटरनेट नाम की एक कंपनी का ब्रॉडबैंड खरीदा था। फिर उसके बाद मैंने किसी और जगह पे शिफ्ट कर लिया एंड आई हैड टू डिसकंटिन्यू टिकोना का इंटरनेट। देन वन डे व्हेन आई वाज डूइंग सम वर्क, आई गेट अ कॉल फ्रॉम अ लेडी who claims that she is speaking from some high court or supreme, not supreme court but some court in Delhi। एंड वो कहती है कि टिकोना की तरफ से आपकी आपके ऊपर एक केस लगा है कि आपने उनकी ड्यूज बहुत महीनों से सबमिट नहीं किए और उसका इंटरेस्ट वगैरह मिला के आपको इतने इतने पैसे भरने पड़ेंगे, या फिर आपके ऊपर वो केस आगे बढ़ेगा। तो आप अभी बताओ, आप पैसे भर रहे हो या क्या कर रहे हो? अब तब मैं बहुत छोटा था। छोटा मतलब आई आई वॉज नॉट वेरी अवेयर ऑफ व्हाट थिंग्स गो ऑन। और अगर कोई कोर्ट की बात सुनता है, राइट, या कोई पुलिस की बात सुनता है, वो किसी भी तरीके की स्टोरी हो सकती है। वो आप पे हो सकती है, आपके किसी जान पहचान वाले पे हो सकती है, किसी भी प्रकार की स्टोरी से वो आपको डराएंगे। मैं डर गया और मैंने बोला कि अभी के अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि किस जगह पे पैसे ट्रांसफर करने हैं, क्या करना है। देन द लेडी काम डाउन और बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से बोली कि नहीं ठीक है, अगर आपको पैसे जमा करने हैं तो आप साइबर कैफे में जाइए और पे करिए। आई थिंक मेरे पास कोई इंटरनेट का इश्यू था या जो भी था, एंड शी ऑफर्ड कि ऐसे कर सकते हो। दैट एक्चुअली, मैंने उसका फोन कट करने के बाद मुझे एक मोमेंट में रियलाइजेशन आया कि दिस इज क्लियरली अ स्कैम। और मैं तुरंत जाके गूगल पे मैंने सर्च करना शुरू किया, टिकोना स्कैम समथिंग लाइक दैट। और इतने सारे आर्टिकल्स आए, इतनी सारी कंप्लेंट्स आई कंज्यूमर फोरम्स पे, रेडिट पे आर्टिकल्स थे, और बहुत सारे उनके फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे लोगों के कमेंट्स थे कि हाउ टिकोना डज दिस काइंड ऑफ stuff, being a company which is
ऑपरेशनल बाय द वे। ऐसे नहीं है कि वो कोई फ्रॉड कंपनी है, वो एक ऑपरेशनल कंपनी है जो इंटरनेट सर्विसेज एक्चुअली लोगों को प्रोवाइड करती है, और ये सारी चीजें भी वो लोगों के साथ करते हैं। तो वो अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद एक नॉर्मल इंसान, चलो मैं तो फिर भी यंग था तो मुझे थोड़ा टाइम में रियलाइजेशन तुरंत आ गया, बट पीपल जो ओल्ड होते हैं या फिर जो बहुत ही टीनेजर्स होते हैं जिनको समझ नहीं आया, और उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया और उनको बोल दिया गया कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम ऐसे फंस जाओगे, या तुम्हारा बेटा या कोई कुछ किसी रेप केस में फंस गया, ये सब चीजों से लोग डर के बहुत सारे पैसे दे देते हैं। एंड हाई टाइम यहाँ पे बैंक्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ दे, उनको समझ आना चाहिए कि कौन से अकाउंट्स को फ्रॉडुलेंट ये करना चाहिए। अब पता नहीं वो लोग उसमें भी और ज्यादा दिमाग लगा के उन अकाउंट्स को सिक्योर करते होंगे तो मुझे नहीं पता, मल्टीपल मल्टी लेयर्ड वो अगर उसको अमाउंट ट्रांसफर करते होंगे तो मुझे नहीं पता। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं और अगर वो ऑनलाइन होते हैं तो उनका एक एज वाइज कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि अगर ये बहुत लेट से 70-80 साल के इंसान का अकाउंट है और वहां से सपोज करो 70 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है, दे शुड नॉट लेट दैट ट्रांजैक्शन प्रोसीड बिफोर अ ह्यूमन इंटरवेंशन, जहां पे कोई एक समझदार बंदा उनको गाइड करने के लिए होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है, बट इफ यू वांट टू शेयर एनी सच सिमिलर इंसिडेंट्स दैट यू माइट हैव हर्ड और माइट हैव एक्सपीरियंस योरसेल्फ, प्लीज फील फ्री टू शेयर। नहीं नहीं, यू आर राइट, एब्सोल्युटली. In fact, this has happened. Yesterday, I read Kolkata में. There's this particular woman who was called by someone, बैंक मैनेजर बोल के किसी को, obviously fraud. एंड उसने बोला कि उसका कार्ड, एटीएम कार्ड, आजकल तो नोबडी यूजेस एन एटीएम कार्ड, ज्यादा किसी को पता भी नहीं एटीएम कार्ड किस टाइप का बोल रहा है. सो उसका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया है एंड उसको रिन्यू करने के लिए दे सेंड द न्यू कार्ड, और ये पूरा प्रोसेस फोन में हो जाएगा. सो शी अग्रीड, शी वाज बिजी डूइंग समथिंग, सो वो बोली अच्छा ठीक है चलो लेट्स डू इट. एंड उसके बाद उन्होंने उससे एक ऐप डाउनलोड करवाया which gave them remote access to her phone, so वो देख पा रहे थे whatever she was doing or doing. And she started doing the transactions. कुछ भी नहीं, मतलब जस्ट ओटीपी लिंक में क्लिक कर ओटीपी दो, दैट्स इट. उसमें उसका 1,20,000 रुपए खर्चा हो गए. इमीजिएटली इमीजिएटली उसके बैंक से फोन आया उसको. एंड दे टोल्ड हर कि आपके अकाउंट से 1,20,000 खर्चा हुआ है, इज इट यू डूइंग इट? तो शी सेड यस, बट तो उन्होंने कहा दिस साउंड्स लाइक अ फ्रॉडुलेंट थिंग बिकॉज आपको पता भी नहीं टू व्हाट यू हैव अग्रीड. तो इंस्टेंटली उसने अकाउंट ब्लॉक करवाया एंड दैट इज हाउ 1,20,000 में उसका बात सॉर्टेड हो गया था. मतलब इमेजिन इफ उसके पास और भी ज्यादा पैसे होते. सो आई थिंक व्हाट यू सेड, बैंक्स डू इट बट दे हैव टू बी क्विकर ऑन द अपटेक. लाइक बिकॉज बहुत हम्म। लोग बहुत बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, यू नो, ओल्ड पीपल, यंग पीपल, मिडिल एज बिजनेसमैन, ये वो. They have हम्म। to be more quick and they have to report faster, I feel. I mean, the moment you राइट। um, but yeah, I mean, I'll give you a statistics and you'll be shocked that जनवरी से लेके अगस्त महीने आंध्र प्रदेश में 508 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है थ्रू डिजिटल अरेस्ट. एंड बाप रे। हाँ, नो नो, दैट इज नथिंग बिकॉज अभी भी टुडे आई रेड कि ऑल ओवर इंडिया 2,580 करोड़ का लॉस हो चुका है जस्ट थ्रू डिजिटल अरेस्ट. दैट्स इट. एंड दैट्स अ प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स. 2,580 करोड़ have been lost by people through digital arrest. So I want you to explain what is digital arrest and how do people know they are being digital arrest? Any idea? Like, um, So as far as I've heard or seen hmm, whatever hmm, on the internet, डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है ना कि आपको एक फोन आएगा, hmm, um, जब दे ऑल्सो टारगेट ऑन बेस्ड ऑन द टाइमिंग, उनको पता होता है कि किस टाइम पे आप सबसे ज्यादा बिजी हो सकते हो, बिकॉज बिजीनेस
जो होता है ना, उसमें आदमी दिमाग का यूज करना बंद कर देता है। उनको ऐसा होता है कि जल्दी से फोन उठाओ और जो भी है जस्ट गिव द आंसर एंड जस्ट गेट गेट ऑन विथ योर लाइफ। तो दे विल टारगेट यू ड्यूरिंग लाइक पीक वर्किंग आवर्स और ऐसे कुछ। फिर दे विल स्टार्ट टेलिंग यू स्टोरीज। वो तुम्हें ऐसे कुछ बोलने लगेंगे कि मैं इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, राइट? तो उससे है ना, आपको एक डर बिठाया जाएगा आपके मन में कि कुछ तो ऑथेंटिक और कुछ तो सीरियस हो रहा है। देन दे विल हैव ऑलरेडी डन सम सॉर्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग ऑन यू, जिसमें उनको पता होगा कि आपको बेटा है, बेटी है, जो भी है, जिसके बेसिस पे आपको कुछ ट्रुथ लगे, कुछ डर लगे और भी ज्यादा कि इस चीज का खतरा हो सकता है अगर मैं इनकी बात ना मानूं तो। या फिर आपके बारे में ही, लेट्स से अभी वो देयर वाज सम Suspicious सोशल मीडिया pattern. इन्फ्लुएंसर Yeah. I या heard. सम बहुगुणा, हाँ, उसको भी Ankusha. कुछ हाँ, उसको कुछ ड्रग्स की केस पे ये किया गया था कि आपके आपके ऊपर ऐसी केस हो रही है, तो आप हमारी बात अभी मान लो या फिर हम आपका केस कर देंगे और आपको फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आप अभी हमें इतना, हम लोग जो भी बोल रहे हैं उतना पैसा दे दो, वरना हम लोग आप पे इतना, ये मतलब इतना इतना पेनल्टी बिठा देंगे, ऐसे कुछ, राइट? दे आर ऑल्सो ऑर्डर्ड टू नॉट टेल थिंग्स टू अदर्स बिकॉज उससे मैटर्स कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, जिससे आदमी और ज्यादा डर जाता है और वो किसी को मदद मांगने से बेहतर यही सोचता है कि मैं अपना रेपुटेशन बचा लेता हूँ या ऐसे कुछ। इट्स ऑलवेज दिस इमोशनल गेम दैट गेट्स प्लेड विथ यू, जिसमें आपकी या आपकी फैमिली की इमेज को लेके या उनके कुछ ना कुछ चीजों को लेकर उनको फंसाने से बाहर निकालने का एक तरीका होता है कि आप इतना पैसा दे दो और आपको छोड़ देंगे। तो फिर आदमी उसमें फंस जाता है। एंड जिनको बिल्कुल ही पता नहीं होता, फिर वो लिटरली 24-24, 36-36 घंटे उन कॉल्स में लगे रहते हैं, उनकी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होते हैं और पूरा उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग तो बेचारे वो स्कैम होने के बाद शर्म के मारे बता भी नहीं पाते। तो हाई लेवल ये है, बट आई एम श्योर देर आर मोर सोफिस्टिकेटेड वेज दे आर डूइंग इट नाउ। Yeah, I recently heard कि they also like get on video call and एक जन पुलिस ऑफिसर या सीबीआई ऑफिसर बन के बैठा रहता है एंड वो देख के लोग और डर जाते हैं कि माय गुडनेस someone I know was almost convinced to hand over the money and this is someone who's super educated and intelligent. उनके साथ क्या हुआ था कि उन्हें कहा गया था कि बॉम्बे में पोर्ट में उनका एक पैकेज पड़ा है एंड उसमें कुछ सस्पिशियस मिला है एंड उनका आधार चोरी हो गया था डिटेल्स और उस नाम से आया। थैंक गॉड एट द राइट मोमेंट उनके पास, दिस इज अ कॉलीग ऑफ माइन, उनके पास उनका आधार नहीं था तो शी कॉल्ड हर डॉटर फ्रॉम अ डिफरेंट नंबर कि अपना आधार कार्ड भेजो मेरा वाला। द डॉटर रियलाइज शी सेड लाइक इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट नहीं तो यू विल बी बिग टाइम स्कैम्ड। तो ये हो रहा है बट यू वर राइट लाइक गेटिंग बैक टू समथिंग यू वर टेलिंग कि इसका कोई डेमोग्राफिक नहीं होता। रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ न्यूज़पेपर आर्टिकल जो कह रहा है कि there are 3, 4, 5 ways through which people of different demographics are मतलब लपेट ले रहे हैं इसके अपने। The younger audience like 25 to 40 or maybe 20 to 40 उन्हें high investment schemes बेचा जा रहा है। तो these high investment schemes stock market fraud crypto में invest करो high returns इसको कह के like people invest quickly to get more money and ultimately उनका कोई पैसा नहीं बचता है। तो what I read is कि कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा कुछ ऑफर कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू कि मे बी 50% रिटर्न्स तो जिंदगी में एक्सेप्ट मत करना। ये कोई फ्री फॉरवर्ड का 1 रुपया नहीं देता है कोई आपको क्यों आपके पैसे डबल कर देगा। सेकंड कह रहा है कि अगर कोई ऐसा हो तो प्लीज उनसे उनका आरबीआई एंड सेबी का लाइसेंस मांगे। And third is कि please never trust them. So if they pass the check, then sure, but pretty much 99.9% झूठ होता है. So मतलब, don't do it. The other is old people who get through digital scams, digital era scams, something जो you said correctly.
Yeah, did you know about this? You must have done random sampling in some of your project. Apparently, there are real life implications and uses also. So, have you heard about it? The random sampling they're doing. This is real, by the way. No, I was not aware of it. I'll क्या tell करते you. हैं? Yeah. So, WhatsApp सबके पास है. India is the largest market for WhatsApp. Everybody has WhatsApp. Right. So, they will फॉरवर्ड अ मैसेज. ठीक है. वो होता है ना बुका बुका, 50 लोग को फॉरवर्ड करो, 10 लोग को फॉरवर्ड करो, Hmm. धनलक्ष्मी ब्ला ब्ला ब्ला. सो Hmm. दे नो कि कौन किसको फॉरवर्ड करे. ऐसे समझो, दे फॉरवर्ड 100 पीपल सी अ पोस्ट. ठीक है. उसमें से 50 पीपल फॉरवर्ड दैट पोस्ट, 50 विल नॉट. 50 पीपल अगर 100 लोग को फॉरवर्ड करें, सो उस लिंक से उन्हें पता चल जाता है, इंक्लूडिंग डिटेल्स, हु हैज फॉरवर्डेड, तो एंड सेकंड टू whom have they forwarded, किसको फॉरवर्ड किया है. इससे क्या होता है, Hmm. इन्हें पता चल जाता है कि ये गलिबल ऑडियंस है, ये भरोसा कर लेंगे Hmm. बिना पर धोखा दोगे तो. एंड जैसे पता Hmm. चल जाता है, स्टैट्स एंड डिटेल्स आ जाता है, दे स्टार्ट बोम्बार्डिंग देम विद फेक स्कैम वाला एडवर्टीजमेंट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है. हाँ. देन एंड हाउ, बिकॉज वंस यू क्लिक एंड डाउनलोड, आपका रिमोट एक्सेस आ जाएगा, देन दिल टेक ऑल योर मनी. So they'll install Hmm. malware in your phones. So, and one of the biggest trap is iPhone logo. 10,000 में iPhone logo. 2 लाख का iPhone. Why would they give in 10,000? 10,000 में आपको iPhone का वायरलेस बैटरी भी नहीं आएगा. To be honest. But people get But yeah. sorry to interrupt, but Yeah. Yeah. don't you think इसमें the government and the company both should somewhere hold the accountability of restricting such kind of activity on their platform and in Yeah, their country? correct. But think about it. Anybody can send a WhatsApp message. How will Apple know किसने कहाँ कब कितने बजे कैसे भेजा? Apple would not know, but malware installation is not a small thing. That हम्म. means आपका जो भी मैसेज है उसमें कोई ना कोई कोड है which is getting executed. हम्म. मतलब आपकी ऐप में vulnerability है, हम्म. right? Yeah. तो you being a company which runs such a big, you know, uh, Product. इतने बड़े यूजर बेस के लिए आपकी ऐप रन हो रही है, तो आप ये सब चेक्स तो सिक्योरिटी वाइज तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yeah. दैट ऑल्सो कम्स इन द रेडार ऑफ द फोन मैन्युफैक्चरर कि आपके हम्म. फोन पे, आपके हम्म. ऑपरेटिंग सिस्टम पे इतनी खुली छूट दे रखी है आपने कि कोई भी आके कुछ भी कोड एग्जीक्यूट करके चला जाता है जिससे सारा एक्सेस भी मिल जाता है. हम्म. डोंट यू थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट Yeah. ऑल्सो नॉट जस्ट व्हाट्सएप कि अगर आपके गूगल पे डिटेल्स जा रहे हैं उस पे, Yeah. आपके आई Yeah. आपके पास सपोज कर लो आईसीआईसीआई की ऐप है, ये सारी Yeah. डिटेल्स अगर उसमें जा रहे हैं, Yeah. दैट दैट जस्ट सीम्स लाइक इधर इट्स फेक. जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है मार्केट में, आई एम सॉरी, आई एम नॉट कटिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग कि इधर ये इंफॉर्मेशन ऐसे जो आ रही है ना मार्केट में कि ऐसे करके मालवेयर आ जाता है आपके फोन में, इधर दैट इंफॉर्मेशन इज फेक, या फिर ये एप्स जेन्युइनली रिलायबल नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है, फिर तो आप वापस उन फोन्स पे चले जाओ जिसपे कोई कोई इंटरनेट बैंकिंग ही नहीं होती, फिर उसपे Okay. बस फोन लगते हैं. The back. Snake. हाँ. No, but these were said by CID officer of West Bengal. So if ओके. police is saying that, so I'm sure it is reliable to certain extent. So yeah, I'll give you another one. And to see is to believe, right? ऐसा कहते हैं. So remember, people are using now AI deepfake videos where say anybody, it could be Virat Kohli's deepfake, saying कि हम इसमें इन्वेस्ट किए हैं, आप लोग भी कर सकते हो. Who will not believe that? Which is why Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai, recently they've gone to Bombay High Court to protect their personality rights, and courts have actually granted them the right कि you cannot use their photos, voice, video, whatsoever for any purpose. So if someone is found doing so, उन पे केस होगा. So now it's actually, I mean,
is on the people to protect themselves because it's just widely available. So deep fake is another thing we have to protect our family, friends, relatives from. Like आप देख लेके आप भरोसा मत कर लेना. Always double check, double verify, verify multiple times from multiple sources before investing even 1 rupee. Because it's gone forever. I'll tell you one example. Recently, 74-year-old man, हमारे यहाँ पे बंगाल में, he's a central government का retired employee. He lost 1.4 crore rupees from his retirement fund. उसके retirement fund में 1 करोड़ 4 लाख रुपए. He lost it because of a digital arrest scheme. If you बाप रे. think, if you think that's it, no. Um, Last year, November, में another man lost 1.8 crore rupees. And thank God police could act. And two teenagers, can you believe it? Two teenagers from Odisha were caught and they were arrested. The money was not got. मतलब तब तक उनका तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होता है मल्टीपल कंट्रीज में. डू यू नो इंडिया और कैम्बोडिया के साथ रिसेंटली डिस्कशन हुआ था जहाँ Cambodia and India is basically they're working together to protect this because they have multiple bank accounts, multiple places. बाप रे. सोचो 1 करोड़. You worked all your life. लाइफ टाइम की जो हम्म. उस आदमी ने बेचारे ने सेव कर करके, या फिर यू नो मस्ट हैव Yeah, गॉटन दैट सैलरी का एक yeah, हिस्सा क्रेडिटेड टू दैट अकाउंट yeah, फॉर हिज yeah, एंटायर लाइफ, और वो ऐसे झटके में चले जाना. yeah, स्कैमर्स आर. yeah. So इसीलिए I'm telling, we should all be really, really careful. Oh, एक और scam आया market में, very famous. This has happened with a friend of mine, actually, which is, it has happened to a friend of mine for sure. एक जन के साथ हुआ था, but उसके पापा intervened and वो बच गया. Which is be very careful of delivery people. जो हमारे घर में दिन रात आते रहते हैं ना, Amazon, Myntra, Flipkart, Meesho, Blinkit, blah blah blah. इसमें हमारा नाम होता है, हमारा नंबर, एड्रेस होता है, right? So दिस हैपेंड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. उसने मैक्स का कोई कुर्ता ऑर्डर ही नहीं किया था. उसके घर में डिलीवरी मैन पहुंच गया, जबरदस्ती पकड़ा के चला गया. एंड हर मदर हैड टू पे. इट वाज डन थ्रू सीओडी. सो हर मदर हैड टू पे. आई थिंक दिस वाज अ चेकिंग मैकेनिज्म थ्रू व्हिच कि ऐसा स्कैम होता है कि नहीं. दिस वाज अर्ली डेज. एंड दिस हैपेंड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज एट वर्क. सो शी वाज बिजी. उसके घर में एक आदमी आया, 1500 या 2000 रुपीज का सामान लेके कैश ऑन डिलीवरी. And he actually gave the girl's fiance's name and number कि उन्होंने मंगाया है. And the girl was not there. She was in school teaching. So her father was there. Thankfully, he had the rationality to. But it's not very difficult, no? पैसे दे देना कि ठीक है जाओ. But he called my friend, and she said, "My fiance will never send me anything on cash on delivery. He always pays. Like this would never happen. Nobody would do that. Like cash on delivery, nobody would send that." इसी तरह, and then she called the fiance and he said, "No, I haven't sent anything." फिर जब तक उसका पापा could get back, he ran away because he saw so much happening. Recently, this happened. Two such instances happened in Calcutta. एक लेडी घर में दरवाजा खोली, वो बोलता है कि 700 रुपया का है ना, सॉरी 1500 का है, आपकी बेटी ने मंगवाया है सनस्क्रीन. इमेजिन द डिटेल्स. And the phone number was correct, the name was correct, and the address was correct. So she said, all right. She then paid because the daughter was elsewhere. She paid. खोल के देखती है डब्बा खाली. ठंडन गोपाल डब्बा खाली है. So अगर किसको आके कुछ दे रहा है, कह रहा है कैश ऑन डिलीवरी है, always, always, always clarify with the वेरीफाई. person who's actually sent or not, because most likely, or check the order history, or ask for other details. So difficult, राइट. no? राइट. बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में. Yeah. बट निधि, टेल Yes. मी, लाइक अगर किसी के साथ स्कैम हो जाता है, Yeah, yeah, yeah. अगर मेरे साथ हो गया, मैंने पैसे दे दिए, तो इज देयर अ वे आई कैन Yes, yes. प्रोटेक्ट माय मनी समहाउ? Yeah, yeah, yeah. You call the first hour scam होने के बाद is called the golden hour. जिसमें if you report to the police and the cyber crime,
there is a very high chance you can get your money back. Maybe not entirely, but a part you will get back. The man who lost हम्म, 33 lakhs recently, यहाँ पे कोलकाता में, उन्होंने पुलिस को बताने के बाद पुलिस को रिकवर 8 lakhs, which was good. ओके। उनका थोड़ा लेट हम्म, हो गया था बताने में, but तो वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में जल्दी जल्दी ट्रांसफर करने लगते हैं पैसे थ्रू हवाला हम्म, ट्रांजेक्शन ऐसे। तो what police do is हम्म, कि they try to find the channel and they block all the channels. But that हम्म, has to be done within 1 hour. The other thing is हम्म, गवर्नमेंट का है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड बोल के एक जगह है, वहाँ पर आप जाके क्लिक करके अपना सारा डिटेल दे दो, दे विल ट्राई टू डू। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू इन्फॉर्म द पुलिस एज सून एज पॉसिबल, साइबर क्राइम डिवीजन। हम्म, उसका नंबर आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। सही वेबसाइट से देखना, नहीं तो आप फिर स्कैमर को पैसे दे देंगे। So there is the thing, but हम्म, inform the police. And the other thing is instantly call your bank and block your account. And if possible, block every account you have. Because most likely they know the other fans से तो कुछ भी मिल जाता है ना, आपके कहाँ के अकाउंट एवरीबडी knows. लेकिन अकाउंट के डिटेल्स पता करने से वो पैसा निकाल पाते हैं? मतलब you authenticating a transaction is one, But if they have put authorizing a a transaction. malware, but if they have put a malware link on your phone, so how difficult is it हम्म, for them to see what passwords are there and what OTP comes and when will you? You never know. These are very sophisticated technology. मतलब आप हम्म, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, you're doing your thing, I'm doing my thing. These people are working हम्म, very hard. They're not doing anything. हम्म, This is their day job. This is their main job. And this is हम्म, actually work with a lot of returns. मतलब thousands and thousands of crores. हम्म, So, I mean, one scam you're set for life. हम्म, So, yes. Yes, so we shall not be very. so pessimistic. Yes. Share this information with us, with as many people as you Of can. course, of course. This was super informative, Nidhi. So many things I did not know about. जस्ट टू ऐड, मेरे पास Yeah. एक और चीज थी जिसमें, जैसे तुम ये बोल रहे हो ना, ये तो बड़े बड़े स्कैम्स हैं। लोगों के साथ छोटे छोटे स्कैम्स होते हैं, जैसे कि किसी को कुछ बेचना है। आई न्यू समवन इन माय प्रीवियस कंपनी जिनको शायद कोई ये वर्किंग टेबल बेचना था, उनका जो ऑफिस चेयर और टेबल का सेटअप होता है ना, पर टेबल बेचना था। तो उन्होंने कोई OLX वगैरह पे डाला। OLX वालों ने भी किसी ने, बायर ने उनको अप्रोच किया, बोला मैं आई एम इंटरेस्टेड। उन्होंने प्राइस कोट की, उसने अपना कुछ भेजा, एंड इट वाज कुछ तो स्क्रीनशॉट जैसा कुछ था। जैसे दे ओपनड इट, इट एक्चुअली वाज टू गिव देम दैट मनी एंड नॉट एक्चुअली द मैसेज ऑफ हिम सेंडिंग दैट मनी। तो ये कुछ उनके साथ कुछ 10-12 हज़ार का उनके साथ ये हो गया, स्कैम हो गया। Oh. अभी ऐसे केसेस में क्या होता है ना, कि Hmm. इसमें भी लोगों को लगता है कि छोड़ो यार, हाँ, बट रिपोर्ट आइडियली करना उन्होंने है। नहीं छोड़ना चाहिए वो, उसको भी Hmm. रिपोर्ट करना चाहिए। और उसको Yeah. पैसे वापस करने का भी यूपीआई का भी एक वेबसाइट है, जहां पे Hmm. अगर आप यूपीआई अपने सब ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालते हो ना, तो ओनस इज ऑन द रिसीवर टू Hmm. एक्सप्लेन व्हाई ही हैज रिसीव्ड दैट मनी, Hmm. और Oh. क्या ऐसा प्रोडक्ट उसने दिया था जिसके लिए उसको वो पैसे मिले हैं। और अगर Hmm. ही फॉल्स, मतलब इनसफिशिएंट इन एक्सप्लेनिंग इट, तो उसको वापस हो जाता है वो ट्रांजैक्शन। Oh. हाँ। I didn't know that. यस। Oh. एंड Wow. ऐसे तो बहुत स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ। Yes. मतलब तुम सोचो, तुम बेचने गए और तुमने ही पैसे दे के आ गए, राइट? उल्टा हो I गया could be तुम्हारे that. साथ। I could be that person. You know me. I bargain ulta. This happened to me in Shillong. Like I found a coat I loved it. He said 600. My friend had taught me कि जम के bargain करना. I know no buys any day. So I said 300. And he said no. हम्म, I said 400. He said no. He said 500. I said 500. I got it for 500. मेरा गाड़ी रिवर्स में चलता है. So I'm very bad at it. But नो बट jokes aside, this was super super helpful. yeah, So yeah, many yeah. things I did not know of, और बहुत सारे पॉइंट्स तो whatever you were saying I was agreeing to it, कुछ चीजें इधर उधर मिस भी हो गई होगी,
but maybe we Yeah, can cover up in next yeah, yeah. upcoming videos. We can cover more Yes, things. yes, This yes. was genuinely super interesting topic to talk about. Yeah, yeah. Thank you. Yes. Share, Yes, share it with everyone. And happy totally. Diwali. Happy Diwali. Hope you and your family have a great time this Diwali. And Yeah. Yeah, if I yeah, survive the cleaning up, then. Okay, okay. bye. All right. Yeah.